Hello friends and welcome back to Edureify YouTube channel. I hope you all are doing well. So today Edureify is here for all the students who are appearing for their NEET exams and struggling in preparing for the biology subject. Right? Because biology is one subject in which you have to learn lots of diagrams and lots of systems. So with the help of Edureify intelligent book, students will get better solution and will get the understanding of the conceptual basis of CBSE biology subject. So before getting into the video, I would like all of you to please subscribe this channel and click on the bell icon so that further के हमारे जितने भी videos बन रहे हैं नीट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इजीली एक्सेस कर सकें। हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग एड्यूरीफाई के प्रैक्टिस सेक्शन से किस तरीके से अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन प्रैक्टिस टैब। आई हैव क्लिक्ड ऑन प्रैक्टिस बटन। आई एम क्लिकिंग ऑन माई एग्जाम। आई एम गोइंग फॉर नीट एग्जाम। Then I am selecting my subject biology and typing the chapter name reproduction in organism. Or we can choose it directly from here. Plant kingdom. So as you can see there are 15 number of questions, flap cards, and we will be giving the answers of these questions and checking the result. So our first question is, in eulothrix, meiosis takes place in cells of the filament, hold fast, zygote, or zoospores. Let's see the options, possible answers. Let's flip and see. So 3 is the right answer. Here comes the next question. The plant part which consists of two generations, one within the other, is germinated pollen grain, embryo, unfertilized ovule, seed. Just flip the card and see the answer. It's fourth correct. Which one of the following is heterosporous? Diropteris, Salvinia, Edentum, Equisetum. View options. Click on the possible answer. OK and flip card and check. It's 2. So like this way you can go for 15 cards quickly and see your option whether it's correct or wrong. So this is the flashcard features with Edureify is providing you for practicing particular topic in just 15 minutes of time. You can also practice. So जिसने भी अभी तक हमारी ये Edureify लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करी है वो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाए और वहाँ से इसको डाउनलोड करे, अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करे और आज ही बायोलॉजी की प्रैक्टिस हमारे फ्लैश कार्ड्स के साथ करे। आप देखिएगा कैसे खेल खेल में आप बायोलॉजी के कठिन से कठिन टॉपिक की तैयारी इजी मैनर में कर लेंगे। सो एड्यूरीफाई करो, पढ़ाई करो। थैंक यू।